Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. The topic name is reproductive health. This is taken from NCERT class 12th unit 4. In today's class, we are going to do the problem solving. Okay, the first question is suggest methods to check the present population growth rate in India. हमारा सवाल क्या है? कुछ मेथड सजेस्ट कीजिए जिससे कि हम इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को चेक कर सके, उस पर थोड़ी हम रोक लगा सके. ओके, सबसे पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है. सो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन प्रमोट द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन एजुकेट द मासेस अबाउट द यूसेज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स. कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं, हम उनको उसके बारे में बता सकते हैं. ओके, सेकेंड इज वी कैन प्रोवाइड कंप्लीट नॉलेज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. हम क्या बता सकते हैं उनको, हम उनको बेनिफिट्स बता सकते हैं. फैमिली प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं. ओके, द नेक्स्ट इज जो कपल्स, वी कैन गिव सम इंसेंटिव्स टू दोज कपल्स हु हैव स्मॉल फैमिलीज. यानी कि जिन कपल्स की स्मॉल फैमिलीज है, इंसेंटिव्स कैन बी गिवन टू दोज कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज. इंसेंटिव्स टू द कपल्स who have small families. ओके, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेक पीपल अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन राइज. हम उनको बता सकते हैं अगर पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ती रही तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. So we can educate people about the consequences of uncontrolled population rise. इसके हम उनको क्या बता सकते हैं, क्या consequences हो सकते हैं. And last but not the least, what we can do, we can increase the age of marriage. जो marriageable age है हम उसको increase कर सकते हैं. We can increase the age of marriage for boys and girls. Boys के केस में marriage की age को हम 21 ईयर्स कर सकते हैं और गर्ल्स की एज को हम 18 कर सकते हैं. ये हुआ है लेकिन बट इट इज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड. सो वी शुड मेक पीपल स्ट्रिक्टली फॉलो दिस, स्पेशली इन रूरल एरियाज एंड ऑल वेयर दे गेट देयर गर्ल चाइल्ड मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18. सो दिस रूल शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड in order to overcome this over rising population growth in India. Okay, so the next question is what is amniocentesis test. हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, एमनियोसेंटेसिस टेस्ट क्या होता है. एमनियोसेंटेसिस टेस्ट जो है इट इज ए मेडिकल प्रोसीजर और टेस्ट. ये क्या है, ये मेडिकल प्रोसीजर है या हम उसको टेस्ट भी कह सकते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, इट टेल्स अस अबाउट द सेक्स ऑफ द फीटस. ये हमें क्या बताता है, ये हमें फीटस के सेक्स के बारे में बताता है, वेदर द फीटस इज बॉय और गर्ल. वो हमें इस एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक से पता चलता है. ओके, अनबॉर्न बेबी का ही पता चल जाता है. इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक द क्रोमोसोमल कंटेंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज एनालाइज्ड. तो क्या करते हैं, एक सिरिंज के थ्रू द एमनियोटिक फ्लूइड इज टेकन फ्रॉम द यूट्रस और उसके बाद उसको एनालाइज किया जाता है. किस एमनियोटिक फ्लूइड को एनालाइज किया जाता है, उसमें क्रोमोसोम्स, कौन से सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसको एनालाइज किया जाता है. तो उसके एनालिसिस से हमें क्या पता चलता है, उससे एनालिसिस से हमें पता चलता है कि फीटस बॉय है या गर्ल, जो अनबॉर्न बेबी है वेदर इट इज गोइंग टू बी बॉय और गर्ल. सो द मेडिकल टेस्ट और ए प्रोसीजर mainly used for the determination of sex of an unborn baby through analyzing what? Through analyzing the chromosomal content of the amniotic fluid which surrounds the fetus. And this test is called as the amniocentesis test. It is not very much legal. This test is not legal. Okay. So next is what are sexually
transmitted diseases. Why are they considered self-invited diseases? नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस यानी कि एसटीडीज क्या होती हैं और हम इन डिजीजेस को सेल्फ इन्वाइटेड डिजीजेस क्यों कहते हैं? एसटीडीज आर दोज डिजीजेस दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, यानी कि इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स. When we have the unsafe sex, so that time the risk factor of this STD it increases, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. अगर हम different sexually transmitted diseases देखें वो क्या क्या होती है, for example we have gonorrhea, we have syphilis, we have herpes, genital herpes or genital warts, then we have AIDS. So all these diseases, they spread through the unsafe sex. Okay, up why we call these diseases are self-invited? Because people fall prey to these diseases by how they fall prey to these diseases. The first is by having sex with, by having unsafe sex or having sex with multiple partners, yani ki more than one partner. If anyone has more than one partner, so they can easily fall prey to the sexually transmitted diseases. Second is not using any protection during copulation, yani ki no protection. If we don't use protection during copulation, it can lead to the sexually transmitted disease. And next is, and most of the people, if they get any symptoms also, they ignore the symptoms. So ignoring the symptoms of the disease is one of the main cause of these sexually transmitted disease. So whenever you get this symptom, and what are the symptoms? The symptoms are like you get itching in the private parts, or there is some bump or some boil you can see in the private part, or there is increased white discharge. So we should immediately consult the doctor. So we should never ignore the symptoms of this disease. So that is why, because of these reasons, because of the carelessness of the people, they get STDs. That is why we call them as self-invited diseases. I hope you understood the explanation. Thank you.